Oh, okay. So basically, there are couple of things that we need to talk about. One is about this circuit that we have already studied in your lab. That you have a counter here, and what you do is you catch a state over here using some AND gate with some state catcher and some inverters over here. I'm just showing generic AND gate state catcher. So this state catcher, थोड़ा zoom कर दें sir. This state catcher, when this certain state reaches, for example, when we made 0 to 9, we made this state catcher for 10. And this would reset this counter. And it will also send a clock to the next counter. Setting itself is fine. There is no problem. It is the clock that goes to the next counter where it can be a problem. What is the problem? The problem is that Sir, I had a question. yes. सर ये जो स्टेट कैचर है इसकी इंटरनल सर्किट किस तरह का दिखता है? इंटरनल सर्किट स्टेट कैचर का आपने बनाया है लैब में? 10 का स्टेट कैचर किस तरह का होता है? तो अब यहाँ पे 10 आए तो इसकी आउटपुट 1 हो जाए। यस 1 0 1 0 10 आए तो ये दो इन्वर्ट करने पड़ते हैं, दो ऐसी लगानी पड़ती हैं, ये इन्वर्ट करके ये इन्वर्ट करके, तो जब ये 101 स्टेट आएगी तो ये कैच कर लेगा। किया ना ये? ओके सर, यस 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 आई रिमेंबर सर। ओके जो भी स्टेट है, 6 की स्टेट है, 5 6 का भी आपने किया, 9 का भी किया आपने, तो basically if you want to make a state catcher for counter for 0 to 9, you catch state 10, so that when 10 appears in this, output becomes 1 and it resets the counter. So this is that state catcher. So the problem lies here that I found out with a lot of you can say problem face that I also faced. Yeah. So it's not just, maybe you guys, when you are going to do some project like a clock or alarm, you may also face this problem. And that is that when this, uh, how long is this output high? Output of this AND gate or state catcher as I call, how long will it be the output of this state catcher high? How long? Anyone? How long will this be high? Basically, what is going to happen is that as soon as this input becomes 10, AND gate output will become 1. But as soon as it becomes 1, it will reset this counter. So counter will become 0 0 0, and the 0 0 to the state catcher will return this output again to 0. So this is basically this round trip time of this circuit that is going to do that. जो ही ये 10 पे पहुंचेगा, ये आउटपुट 1 होगी, ये 1 होगी, इसको रीसेट करेगी और ये क्लियर हो जाएगा। इसका इस क्लॉक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्लॉक करते जा रहे हैं, आप 10 स्टेट पे पहुंचे तो 10 स्टेट ने इसको क्लियर कर दिया, सारी आउटपुट 0 हो गई और आउटपुट आपकी फिर 0 से स्टार्ट हो गई, 10 तक आप पहुंचे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर यही आउटपुट आप यहाँ पे दे रहे हैं, दिस थिंग इज दिस टाइम इज द टाइम ऑफ दिस सिग्नल ट्रेवलिंग अराउंड दिस रूम।
That time is very small. So the problem occurs. आपके कब है भाई क्लास डीएलसी की? आप लोग थे आए थे या नहीं क्लास में? Only. I've sent 1 or 2 people here to collect their kit, and so have on look at this. Only 4 or 5 people are also present online. काफी लोग आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों लेक्चर में नहीं आते। क्यों नहीं आते आप लोग? अच्छा, आप वैसे ही आए हैं सर। हाँ भाई, आप क्यों नहीं आते? ये आप क्या लगते हैं इसके? दोस्त हैं या भाई हैं? वरना मैंने आपको कहना था जाके इनके पेरेंट को शिकायत लगाएं ये क्लास। हाँ करो यार, इसके पेरेंट को शिकायत। इसके पेरेंट को कहना कि ये सर क्या है, इनके सर टीचर ने शिकायत लगाई है मुझे कि ये क्लास नहीं अटेंड करते। All right, so this time over here is okay. If this time is smaller than this time, then this counter may not register this clock, which is very small. बहुत छोटा time है इसका. It may not register this time. So the solution I found out, there was 2 solutions actually. One solution was that to make this wire very long wire, so that the signal takes it's इतना time लेती है light travel करने में 1 nanosecond. So it will take a few nanoseconds to travel this few yard long wire. ताकि ये यहाँ तक पहुंचते 1-2-3 nanosecond गुजर जाए. And that will have this pulse long enough for this counter. This should be shorter than this. This wire should be much shorter than this. So speed of light becomes important here. So this should be small. This should be this distance should be large. So that is one solution. But usually design engineers don't like these solutions. So they want to do is something like this, that when they want to reset this, if this counter has any parallel load inputs or any inputs, they use 2-to-1 mux over here. The job of this mux is that there is a control here. And this time this control comes here. We have normal inputs to this over here, Qs, and you have zeros here. All 0, 0, 0, 0. Or 4-bit है तो 4 zeros or whatever it is, zeros. So when the catcher output becomes 1, all zeros are selected over here. And on the next clock pulse, these zeros appear at the output. So it is at the clock edge that happens. And the advantage of this is that this time you have to make this catcher for 9, not 10. You have to make this catcher for 9. So when 9 appears, this output becomes 1 and 0 appear over here. On the next clock pulse, these 0 clock into this counter. So this output stays for complete 1 clock cycle. So it's not just a small little glitch, you can say a very short-lived pulse. It's not like that. It's a complete long, proper clock size pulse. And that is how they are actually designed. So you will see that throughout the computers also, you will see you never really reset any. You want to zero something, you load 0 into that. You don't reset. So direct inputs are never used in many circuits because they are asynchronous inputs and people don't like things that don't happen at a clock edge. All right.
Okay, and so the next topic is, इसकी समझ आ गई आपको क्या भाई? अली अकबर, सर इसकी समझ आ गया। मेरा एक प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन था सर, काउंटर से रिलेटेड। जी पूछे। सर काउंटर्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं ना, एक सिंक्रोनस होता है, एक एसिंक्रोनस होता है। सर हाँ हमें बता सकते हैं कि क्यों फायदेमंद होता है कि हम सिंक्रोनस यूज करें बजाय इसके कि हम एसिंक्रोनस यूज करें, या फिर कहीं हमें ऐसी कोई मजबूरी आ सकती है कि हमें सिर्फ एसिंक्रोनस ही यूज करना पड़े? हाँ, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें तो देखे ना यार, ये अगर इस तरह की सीन है आपके पास कि आई यू वांट ऑल द काउंटर आउटपुट्स टू चेंज साइमल्टेनियसली, you don't want to know clock one D flip flop to another and that clock the third one and that another one. So that is not usually uh, very much appreciated with in circuits where you want everything to occur on a clock. So in the processors सर or वेयर in इज एसिंक्रोनस अप्रिशिएटेड देन? asynchronous can be used in uh, circuits where you want to count कार काउंट करना चाहते हैं आप, सही है, किसी डिस्प्ले में लगा के एक सेंसर है, उसके आगे से कुछ चीज गुजरती है वो काउंट कर लेता है, एंड दैट इज नॉट अ वेरी हाई स्पीड एप्लीकेशन। गाड़ी गुजरने में कम से कम एक या 2 मिली सेकंड तो गुजरेंगे ना दो गाड़ियों के बीच में से, तो इतनी देर यस। तो उसके लिए तो माइक्रो सेकंड में उसने अपना काम कंप्लीट कर लेना होता है काउंटर ने, तो उसको इस तरह की चीजों में कोई मसला नहीं होता। सिमिलरली अगर आप देखें तो मल्टीमीटर, जो हैंड हेल्ड मल्टीमीटर हैं, उसमें इस तरह का काउंटर यूज हो सकता है जब आप डिस्प्ले को चेंज कर रहे हैं, बिकॉज द काउंटर इज इन दैट केस काउंटर इज नॉट वेरी हाई रियल टाइम एप्लीकेशन। या आप हाथ लगाते हैं तो आपको 2-4 मिली सेकंड लग जाते हैं लगाना, उसको सेट करने में इतनी देर लेता है माइक आपका डिस्प्ले आपको आउटपुट देने में, डिजिटल मीटर के केस में वो एकदम से नहीं देगा आपको। सो देयर इज अ बिल्ट ओके सर। इन, तो इस तरह की एप्लीकेशन जहाँ टाइम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, you just want to quickly make some counter. Similarly, if you want to divide a clock, so you divide clock. End of the clock is the final clock is what you want. You don't mind कि पिछली क्लॉक का फेज क्या है, पिछली क्लॉक का टाइम क्या है, अगली आखिरी क्लॉक जो आपको मिलती है, that is what you want to use. So that clock is basically uh, your reference clock. वो कहाँ से बन के आई है, किस क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से बन के आई है, कितनी डिले के बाद यहाँ तक पहुंची है, उसका तो कोई मतलब नहीं ना। जैसे आप घर में टूटी खोलते हैं, पानी आता है, अब पानी कहाँ कहाँ से पहुंच के आया उसका तो कोई इशू नहीं है, पानी तो जब आपके पास पहुंचता है आपको तो उसी वक्त लगता है ना कि पानी आ रहा है। आपका रेफरेंस पॉइंट तो टाइम में वही बन जाता है, जब आप टूटी खोलें पानी आ रहा है, टूटी बंद करते हैं पानी चला जाता है। सेम केस है, आपने क्लॉक को कितनी दफा डिवाइड किया, वो पीछे कितनी देर में डिवाइड हो रही है, डिवाइड बाय 2 कंप्लीमेंट में, सिंक्रोनस काउंटर में, दैट डजंट मैटर। आपको तो आखिरी आउटपुट चाहिए बस, दैट इज द वन यू आर इंटरेस्टेड इन। यू आर नॉट कंपेयरिंग दिस विद द ओरिजिनल जिससे वो डिवाइड बाय 2 हुई है। तो अक्सर इस तरह के कामों में तो डेफिनेटली ये ट्रिपल काउंटर ही यूज होता है, जब आप डिवाइड बाय टू करते हैं तो उसमें तो यूज होता है। लेकिन कंप्यूटर्स में जहाँ पर काफी सारी, अभी हम उसी की बात करने लगे हैं, यू डोंट रियली वांट थिंग्स टू हैपन विद डिले, सम डिलेज आर नॉट अलाउड। I know ALU takes some time to do calculation, but that's what I'm going to talk about now. We'll talk about this register transfer language. Basically, register transfer language, RTL. So all the complex
digital circuits don't have a very long combinational logic circuit. Like बहुत बड़ा combinational logic circuit है, input पे भी register लगा हुआ है, output पे भी register लगा हुआ है. It is usually divided into steps. So one small job is done, result stored is in a register. That job is done, and then another job is done on that. So a result is stored in an other register. Then a job is done, and then store an other register, because whatever you do here is a combinational circuit that cannot store anything. तो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है. तो इस तरह से रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा थक 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 करके आगे चलता जाता है. तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और डाटा आगे चला जाए. तो इस तरह से वो रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा ट्रांसफर होता रहता है. और all of there, there are many registers in the processor. Some of them are user visible and some of them are user invisible. By user visible means that when you write your assembly language program, you have some registers to play with. So those registers, they are user visible registers. But processor, it has its own many registers. They are part of the processor hardware and you cannot access them. You don't even know what they are called. And but of course, they are inside the processor to store intermediate data. So they are called user invisible registers. So let's see another example here. So what happened in between these registers is defined by this register transfer language. So take an example of this circuit that we have already studied long time ago. We have this adder, and we added a register here. Output of this register was going in here. If you remember like that. And another input was coming from here through switches. आपने शायद लैब में भी किया और वैसे भी किया. So these are A input, this is B input. And this can be called register B because its output is B. The A is coming from switches, where you can set some switches over here. Setting up the switches is also, switches are also registers. If you look at them, in a way they are mechanical registers. जो भी आप उनको सेट कर लेते हैं एक दफा, फिर वही रहते हैं. Unless you set them again. So they are in a way mechanical registers. So if you look at this, I can say that this circuit is doing is that it is doing with every clock pulse. If there is a clock coming here, with every clock pulse, it is doing B. This is how I write. B gets the value of B plus A, where A is coming from the switches. So this circuit can be described in one line, RTL, that this is there is an adder here, which is a combinational circuit, and there is a register. And you can think of this, a register is also the input and a register is the output. So in between B register and the B register, there is this adder. Adder is a combinational circuit. So this is basically
if you tell the ये वाला circuit बनाओ, he will automatically make this. If you processor किसी ने कोई circuit बनाना है, उसे आप कहेंगे भाई ये वाला circuit बना लो, n bit का ये circuit होना चाहिए, 8 bit का होना चाहिए, या जितने का भी, वो ये वाला circuit आपको दे देगा. So rather than drawing this big circuit, you can just say this. That is what is RTL, register transfer language. Second thing is that as I said, you do not reset these registers. You cannot reset these registers. So what you do is here that with this register, you use two inputs. One input, you use a multiplexer. Now I'm going to draw another symbol for a multiplexer. This is very common in some computer organization books. So this is basically a multiplexer. 0, 1, control, select input. So since it is just two inputs, so select is 1 bit. And output of this goes to this register B. And the input of this is normal, this output coming from the adder. Coming from the adder over here, or you can have another input coming from somewhere. These are all 8 puts. So this is basically 8 to 1 mux. Sorry, dual to octal 8 to 1 mux. So 0, 0 means this adder output is normally working like that. So when you want to, for example, reset this, you can make 0, 0, 0, 0 here, select 1, and then you clock this. So when you make all of these zeros, you do the select one line as 1. थोड़ा zoom कर दे, छोटा है थोड़ा सा. ऐसा थोड़ा साथ साथ करते ना करेंगे कुछ ना, थोड़ा उधर कर ले. और कर देंगे. और right. So this register, we can either have the input coming from here, this adder, like that, or it can have an external inputs coming here, which you can use. If you use 0, 0, 0 here, this register B will be loaded with this value, 0. If I use, for example, 17 here, and I do select 1 and clock, this register B will be loaded with 17. So, and if it is, this is, for example, 12, then after each clock cycle, it will start from 17. So 17 से start करेगा ये 17 plus 12 एक clock cycle में 3 plus 12 3 plus 12. तो इस तरह से you can start with some seed value rather than resetting it. So you have a choice. If you want to reset it, you can make all of these zeros. 1 आएगा register B में 0 0. Then it will be, this value will be 0. 0 plus 12 plus 12 plus 12. So basically, this part is where you can load this value into this 17. So immediate, this is called the immediate value. This is when you say in C language, B variable is equal to 17. शुरू में आपने कहीं उसको B को 17 किया या 0 किया है या initialize किया 17 से. So this 17, where did this 17 come from? Where does this 17 come from?
When you write your assembly high level language, this 17 is part of the code. It's not something that go into the data. This is part of the code. This cannot be changed at runtime. आपने किसी वेरिएबल को ना, हर वेरिएबल को इस तरह से कहीं ना कहीं आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है. पहले बी को इनिशियलाइज करेंगे, फिर ये आप ये कर सकेंगे. ए को इनिशियलाइज करेंगे, बी को करेंगे, देन यू कैन डू दिस. Sir, is this just like the ASCII code? ASCII code? सर वो जो ASCII टेबल होती है वो जिसके अंदर ABCD वगैरह के वो गिवन हाँ होते हाँ, हैं. मैं समझता हूँ ASCII कोड, मतलब नहीं, आप तो ASCII आप बी, ये उसका नहीं है, ये तो कंपाइलर ये करता है ना, कि आपने प्रोग्राम लिखा है बी इज इक्वल टू 17, तो कंपाइलर क्या करेगा, बी वेरिएबल है ना एक, यस, उसमें 17 डालेगा. कैसे डालेगा? लेकिन ये सिर्फ इनिशियल वैल्यू होगी, बाद में ये चेंज हो सकती है. हाँ, जाहिर है वो चेंज हो सकती है. बी इज डायनेमिक वेरिएबल, इट्स नॉट सम स्टैटिक वेरिएबल. लेकिन ये वैल्यू स्टैटिक है, ये नहीं चेंज हो सकती रन टाइम पे. जो इनिशियल वैल्यू अगर आपने चेंज करनी है, आप इसको चेंज करें, फिर दोबारा प्रोग्राम कंपाइल करें, इसको 0 कर दें, इसको 10 कर दें, इसको 20 कर दें, जब दोबारा कंपाइल करेंगे, जो भी ये वैल्यू होती है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कोड. एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है. इस तरह की इंस्ट्रक्शन है, ये जो पार्ट होता है, जो कांस्टेंट पार्ट होता है, सर इसको दैट कहते हैं. इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली लाइक अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो पहले आपको इनिशियल वैल्यू सारी वेरिएबल्स को दे देता है, उनके बगैर वो नहीं चल सकता इनिशियल वैल्यू पे. हाँ हाँ, वो देता है ना कोई इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू, क्या देता है? सर वो हम डिसाइड करता है, यूजर डिसाइड करता है जब हम हाँ, तो उसको इससे असेंबली डिसाइड लैंग्वेज. करते हैं ना आप इस तरह से. तो यस. दिस वैल्यू इज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड दिस इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इमीडिएट वैल्यू. देयर इज अ कंपोनेंट, देयर इज अ फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन जो भी होती है 32 बिट इंस्ट्रक्शन होगी ना इसकी, इसके अंदर देयर विल बी अ फील्ड टू स्टोर दिस इमीडिएट वैल्यू. The immediate value is part of the instruction and it goes into the code. When we are going to do this, this is immediate value that comes from the instruction. So when you do this, processor will make this equal to 1. 17 will come here from the instruction and register B will be loaded with 17. ये select line सारी processor के controls में होती है. It knows कि क्या करना है. But when we are going to do this, then it will make it this equal to 0, because this is called immediate instruction, and this is called register to register instruction. Register to register. So the register to register instruction, data can move from one register to another register. So we can even change this scenario here, and we can make this a little bit more interesting. इधर ले आएं थोड़ा सा ऐसा. बैटरी लो कह रहा है, चार्जिंग नहीं की थी ना. All right. Okay. So if I use this circuit, there are usually many registers, but I just assume that there is this register called A, there is this register called B, and data goes from these register to adder, to ALU. Now this is also register to register transfer. Output of this goes to another register, result register or register कह लें. Now ALU is basically arithmetic and logic unit. So it can do all the arithmetic units and logic units. So it also has a, what is called the function input. Function. For example, these are the select lines.
So using these select lines, I can make a plus B, A minus B, A or B, A and B, A plus 1, A minus 1. All of these function tell this arithmetic logic unit what to do. So these function lines are commands for this arithmetic logic unit. So what to do? So if I this in RTL, this is very simple. RTL, we say that result is equal to A function B, where this function can be, if you have a list of all these functions, then this hardware can be, you can make an ALU to perform all of those functions, and you can make this hardware. So if you have a function like, if you have this ALU, there is one very popular ALU. I'm just making this, it doesn't exist in modern day processors, but this is 74181. That was a very popular IC. It's a complete arithmetic logic unit. Costs around 350 rupees, but this is a complete arithmetic logic unit. And it has all the functions, the A plus B, A minus B. So it can do A plus B, A minus B, A or B, inclusive or B, A plus 1. So there are a list of functions. There is one input, sorry, one of these functions is, if it is 1, it will perform arithmetic units. If that is 0, it will perform logic operations. So we'll talk about this, ये किस तरह से बनता है, using arithmetic unit and logic unit. How do you make ALU? I'll talk that in next class. But this IC, I'll request you to look at in Wikipedia about this SAM4181. That was the very first arithmetic logic unit in a complete IC. Very revolutionary IC, changed a lot of things. Many popular computer in those days, even mainframe computer used this IC, SAM4181. It's also called PDP-11. Very popular computer, historical computer, very historical computer, used these IC, SAM4181, PDP-11. So this is not the small thing. अब तो ये सस्ता सा हो गया है, इन कास्ट ओनली अराउंड 350 रुपीज, और आप अभी हमने आज इस दफा इस पे एक लैब नहीं की, क्योंकि वो ऑनलाइन होने की वजह से हम वी कुडंट डू अ लैब ऑन दिस आईसी, बट दिस इज अवेलेबल. अगर आपको किसी सेक्टर में ये यूज करना है, यू कैन यूज दिस SAM4181. विल सेंड यू इन योर प्रोजेक्ट किट. दिस इज अ कंप्लीट अरिथमेटिक लॉजिक. It is all the addition, subtraction, increment, decrement, or and bitwise, all the operations. It comes with the table. So ये function क्या होगा, तो ये क्या operation करे. So this function, so if you have the table and you know कि क्या function करना है, you can make this complete circuit. So this register transfer language is important here. So this is also register to register operation. दो रजिस्टर के बीच में ऑपरेशन होता है, रिजल्ट रजिस्टर में चला जाए. So this is also a register to register operation. So we have this immediate operation, register to register operation. The third type of operation is very simple, and that is related to memory. Memory has two very simple model. For a memory, you have a very simple model.
You give an address, it gives you data. Or you give data and address and alert the right signal, it writes data in the memory. So there are two basic operations, very simple basic operation with the memory. One is read, जिसको load भी कहते हैं, and second one is write, जिसको store भी कहते हैं. इसके लिए कंट्रोल सिग्नल और रीड राइट सिग्नल एक होता है कंट्रोल, इट इज इक्वल टू 1. डिफॉल्ट सर वैल्यू ये तो हमने रैम और रोम में पढ़े थे. पढ़ा था ना ये? जी जी. बिल्कुल पढ़ा था. मैं कब कह रहा हूँ नहीं पढ़ा. दोबारा थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो आरटीएल है वो वाला कंपोनेंट बताना चाह रहा था. इज इक्वल टू 0. So when this is 0, very interesting regarding the RTL. So this is a write yani store, and control signal is this. The model, the RTL is very simple. RTL is for load or load or read. RTL is that, for example, register A gets the value memory location B. ये अगर ना भी हो memory, ये square brackets mean that it is a memory location. It's a value from this memory. So B is a register. If B is equal to say 1000, then the value that will move from this memory location is at location 1000. And that is if this memory is a byte size memory, and variable A is also a character that is byte size character size variable. This value will be an 8-bit value that will move. Assume करते हैं कि memory में पड़ा हुआ है हमारे पास 65. So at this address in the memory, a byte is stored 65. At this address in this memory array, 65 is stored at this location. And when I do this operation means कि इस address से इस pointer से ये value पकड़ के लाओ, and that pointer brings this 65 over. So A value is changed, B is not changed. B को कुछ नहीं होता, is the pointer register. For every variable in assembly language, it always has two registers. One is the pointer register. Maybe you are, even if you are using pointers or not, the compiler will have two registers. One is pointer register and other is the value of that stored in that memory location. Every memory location has two registers associated, every variable. One is its pointer in the memory, second is the value in that memory location. The pointer are a must. Without pointer here, B is being used as a pointer register. Many computers have special registers just to be used as pointers, but that practice has long been, disbanded, because it's good to use all the registers for anything. So that gives you more flexibility. कोई भी register nowadays can be a pointer register or it can be a value register. This is a pointer, B is a pointer register, A is the value register. Similarly, I can say this memory location C gets the value D. This is called gets the value. And this happens at a clock pulse. Every time you see this arrow, that means there is a register and this value is going to this register on a clock pulse.
This is being calculated somewhere, and the time is proper time is given to this. This calculation is complete. Then the corpus will come and the result will be stored into this. ये नहीं है कि ए बी दिया और फटाफट क्लॉक दे दी, ये नहीं है. Between this and this there is a delay, enough delay for this to perform its function. Same here, memory C gets a value D. Here C is a pointer register, for example 2000, D is the value, for example 54. In this case, no register is destroyed. The register's values remain the same. So what is overwritten in this case? क्या overwrite होता है? हाँ भाई, क्या overwrite होता है in this case? Anyone? Memory location. सर जो C का मेमोरी एड्रेस था उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड है मेमोरी लोकेशन ओवरराइट हो जाती है. वो मेमोरी लोकेशन इज नॉट अ रजिस्टर. मेमोरी लोकेशन ओवरराइट हो जाती है. सी के कंटेंट्स 2000 ही रहते हैं, पॉइंटर रजिस्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती. और डी का जो कि हमने राइट कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती. इट्स द मेमोरी लोकेशन दैट चेंजेस. दिस डिस्ट्रॉयज रजिस्टर है. सी एक मेमोरी लोकेशन नहीं है, सी एक एड्रेस नहीं है. पॉइंटर एड्रेस है ना. यस सर, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू आप स्टोर हो जाएगी वो 54 नहीं हो जाएगी. वो 54 हो जाएगी उस एड्रेस पे. लेकिन सी जो है ये भी एक 2000 ये एड्रेस है, ये किस में स्टोर्ड है? ये सी में स्टोर्ड है ना. यस यस यस. तो सी को 54 नहीं करेगा वो. सी एक रजिस्टर है. That will not be 2000 become 54. C will remain C. Yes sir, C की नेचर और है, D की नेचर और है. D की नेचर और है. C is an address register, D is the data register, and over here this is a location in the memory. Basically ये इस तरह का सीन है कि C रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे आती है as an address, और D रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे आती है as data. And then you have this read and write signal that is zero. Once they are both ready, memory location is ready, जब करते हैं तो इस एड्रेस के ऊपर which is provided by the C register, ये D वाला डाटा राइट हो जाता है इस मेमोरी में. मेमोरी हैज हर मेमोरी लोकेशन को आप रजिस्टर नहीं बना सकते, वो तो बेशुमार रजिस्टर हो जाएंगे. So this is another type of instruction that you can perform, and the third type, and that is memory operation. So this is A gets the value mem B, or mem C gets the value mem D. These are two other instructions. So immediate instruction, register to register instruction, and memory instructions. So these are mostly the instructions that a processor can do. Interesting. And this is called a direct indirect address. So many processors only allow indirect address. Indirect means ये C register के अंदर आपका address होता है 2000. मैं ये नहीं कर सकता ये वाली चीज कि मेमोरी एड्रेस 2000 पे सीधा ही पॉइंटर दे दूं उसको ये वैल्यू डाउनलोड कर. दिस इज नॉट अलाउड इन मैनी प्रोसेसर. पहले जमाने में होता था, इसको कहते थे डायरेक्ट एड्रेसिंग, कि आप डायरेक्ट एड्रेस दे देते थे. अब ये कि अगर मैंने किसी मेमोरी लोकेशन में लोड करना तो पहले मैं सी में
उसका पॉइंटर लोड करता हूँ, जिसको हम सी, इसको कहते हैं सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल डी। तो दिस इज डन इन द बैकग्राउंड। आपको नहीं पता लगता कि आप वेरिएबल को अपडेट करते हैं जब, तो ये पहले ये काम करता है, किसी एक रजिस्टर में उसका एड्रेस डालता है, पॉइंटर रजिस्टर बनाता है। So here the C becomes a pointer register. Then it does this. Mem C gets the value D. So D is the value variable, and this is the address of that variable in the memory. Star value of, इसको हमेशा value of पढ़ा करें। Value of D is how much? 54. Address of D is how much? इसको address of पढ़ा करें हमेशा, except when you are calling a function. फंक्शन में पॉइंटर इज एड्रेस को पढ़ते हैं, पॉइंट इज एड्रेस, एड्रेस कहते हैं पॉइंटर को। वैसे इक्वल साइन में इसको वैल्यू ऑफ पढ़ते हैं, इसको एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं। ये चीज कि ये किस एड्रेस पे ये बना हुआ, ये आपको नहीं पता होता, ये कंपाइलर करता है। कंपाइलर जब वैल्यूज बनाता है वेरिएबल्स की, हर एक वेरिएबल को वो मेमोरी में एक रजिस्टर एड्रेस असाइन करता है। So that address is later used. So it keeps two registers for each variable. One the address register for that, so that it can be used in indirect addressing and the value. So any question? Any questions? No, sir. All right, then I No. think I will end it here today. Enough of this done. We'll have next week. We'll have a Viva on register transfer language in the first class. That is on next Wednesday. We'll have सर जो Viva. हमारा प्रोजेक्ट है ये कब ड्यू है सर, इसकी ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट का भी आपको जो है ना प्रोजेक्ट की वो पूछ रहे हैं ड्यू डेट, उसकी जो है ना हम माइलस्टोन आपको भेज देंगे जल्दी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। माइलस्टोन भेजेंगे। ऑलराइट, सो क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल 2 माइलस्टोन होंगे। कोशिश करेंगे 2 माइलस्टोन रखें ताकि आप थोड़ा काम करते रहें इनके ऊपर। तो मे बी विल हैव 1 माइलस्टोन नेक्स्ट वीकेंड एंड अनदर माइलस्टोन आफ्टर दैट वीकेंड। तो एक में आप थोड़ा सिमुलेशन भी साथ साथ शुरू करें एंड उससे अगले माइलस्टोन करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम टू द लैब एंड सी इफ हाउ थिंग्स वर्क। You can always bring your stuff and come to the lab on an individual basis. I can allow you to come the lab for a couple of hours and see the problem. I know many people don't live in Lahore. आपको किटें मिल गई हैं जिनको मेल से जानी थी? सर मिल गई हैं, आज रिसीव हो गई हैं ज़्यादातर। सर आई एम इन सिंध, तो अभी मुझे तो नहीं पहुंची, बट प्रॉब्ली कल आ जाएगी शायद। हाँ, कल कहाँ पे हैं आप? सर यहाँ पे बॉर्डर से आगे है एंग्रो फर्टिलाइजर्स, तो इस एरिया में। कहाँ पे? बॉर्डर से आगे? सर एंग्रो फर्टिलाइजर्स डहर सर की। पंजाब और सिंध के बॉर्डर से आगे। अच्छा, पंजाब और सिंध। मैंने कहा कहीं इंडिया के बॉर्डर के आगे तो नहीं है आप? इंडिया में तो नहीं चली गई कहीं? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। Alright, so okay, Hafsa, do let us know when you get your kit. Inshallah, you'll get it tomorrow, and Okay, I sir. am very much hopeful you will like it, enjoy it, that kit. Okay, so you Sir, are yes. working alone, Hafsa? कोई नहीं आपके नो साथ? सर, सर है, आई जॉइंड अनदर ग्रुप। Alright, so all the best, यस all the best. हाँ, आपके साथ वो Thank- है ना महरीन? नहीं, महरीन है सर आपके वो साथ? सर पहले महरीन और मसना थे, फिर हमने वो चेंज कर लिया था ग्रुप। अब मेरे साथ दानियाल और हमजा हैं। दानियाल और हमजा हैं। हमजा भी इधर ही हैं? ये वाले हमजा हैं या कोई और हमजा है? नहीं सर, ये वाला हमजा नहीं, वो हमजा रफ़ी है और दानियाल है, मोहम्मद दानियाल। वो दोनों ही Alright. लाहौर में हैं। तो ऑलराइट, चलो ठीक है, फिर वो अच्छा हो जाएगा, उनके साथ इधर रब्ता रहेगा हमारा। थैंक यू वेरी मच।
All right, ladies and gentlemen, see you again sometime. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.